Chapter number 39. Please open this. Letter writing we are going to do here. Let's start to read. Introduction. All of us have to write letters to one time or the other. We have to write letters to our parents, relatives and friends when we are away from home. हम सभी को अपनी लाइफ में लेटर्स लिखने पड़ते हैं. बेसिकली हम जो लेटर्स लिखते हैं अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं जो हम अपने घर से दूर हों. These are informal letters. Sometimes we have to write an application to the principal of our school to grant us leave. तो जो लेटर्स हम अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, उन लेटर्स को बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. और कभी कभी हमें लीव लेने के लिए अपने प्रिंसिपल मैम को भी लेटर लिखना पड़ता है. उन लेटर्स को बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स. When we grow up, we shall have to write various kinds of applications and letters to other officials on issues which are not personal. जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे लेटर्स भी लिखने पड़ेंगे जो हमारे पर्सनल इश्यूज नहीं होंगे. Letters to the official are formal letters. We should remember the following important points while writing letters. So dear students, here we have to understand letters are two types. One is called formal and second is called informal. Whenever we write the letters to our parents, relatives, or our friends, those type letters are called informal letters. But when we write some applications to the principal or other official purpose, so those letters are called formal letters. तो लेटर्स दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल जब हम स्कूल को यानी कि अपनी प्रिंसिपल मैम को लिखते हैं कोई लीव लेने के लिए, तो वो उस तरह का लेटर कहलाता है फॉर्मल लेटर. जब अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं तो वो लेटर्स कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर. राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. The address of the writer is written at the top left hand corner of the page. Just below the address, we mention the date on which the letter is written. So dear students, first of all, we need to write the address of the writer. जो लेटर को लिखने वाला है उसका लेटर का उसका एड्रेस लिखना है लेटर पे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे. तो ये ध्यान रखना कि लेटर लिखने वाले का नेम नहीं मेंशन करना एंड जस्ट एड्रेस ही मेंशन करना है. Like R 512 Kirti Nagar, New Delhi 110015. After that you need to leave one line here. पहले एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन लीव करनी है, एक लाइन स्किप करनी है, फिर आपने डेट लिखनी है 11th May 2018. डेट आपने आज की लिखनी है यहाँ पे. राइट. We can write the date in either of these two ways. हम जो लेटर की डेट लिख सकते हैं दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे 11th May 2018, May 11 2018. सो बोथ द वे आर राइट. दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है. अगेन आई टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर एड्रेस, राइटर का एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन स्किप करनी है, उसके बाद डेट लिखनी है. राइट. केयरफुली नोट डाउन वी बिगिन एंड एंड लेटर्स. बिगनिंग एंड. जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर की बिगनिंग में क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं माय डियर फादर या मदर, माय डियर ब्रदर सिस्टर, माय डियर अंकल आंट. जो भी हमारा रिलेशन है सामने वाले के साथ उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना होता है माय डियर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट. राइट. when you are going to end your letter, so in the last you need to write your loving son, daughter, yours affectionately. Right. According to relation you need to write here. So this is the end part of this. To friends, my dear Anil, Rekha, dear Anil, Rekha. So in this way also you can write, and you can also write yours sincerely. So to the principal of a school, if you are going to write a letter to the principal of a school, so you can mention dear sir, dear ma'am or madam. Yours obediently you can mention here. टू स्ट्रेंजर्स, कोई स्ट्रेंजर्स पर्सन को लिख सकते हैं आप सर या मैडम, डियर सर या मैडम. यूवर्स फेथफुली, यूवर्स ट्रूली.
So these are the ending words or these are the starting words, right? The format of a letter is illustrated below. यहाँ पे हमें लेटर के फॉर्मेट को समझना है. So this is the letter, dear students. You need to write this letter to a friend asking him to spend a weekend with you. अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें आपने उसको कहना है कि अपना जो वीकेंड है वो मेरे साथ स्पेंड करो, मेरे साथ व्यतीत करो. So first of all, we will write the address of the writer. 7 Raj Nivas Marg, Hyderabad. Then we need to leave one line here. Then we need to mention the date of today. Then we need to leave one line again. Then we need to mention Dear Keshav. Right? These starting word we need to mention here. My examination are over today. मेरे examinations हैं वो खत्म हो गए हैं. I am feeling happy. मैं बहुत खुश हूँ. And relaxed और relaxed भी हूँ. I hope yours are over as well. और मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारे भी एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे. I would be a good idea to have some fun this weekend. Sorry, it would be. So वो कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा कि अगर तुम ये वीकेंड मेरे साथ व्यतीत करो. Why don't you come over? तुम यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते हो? I have invited Rahul and Priya and they have agreed to come this Saturday. मैंने राहुल को और प्रिया को भी इनवाइट किया है, वो मान गए हैं इस सैटरडे को आने के लिए. We shall all have lunch together and then enjoy music and play games. हम सभी लंच इकट्ठा करेंगे और फिर म्यूजिक को और प्ले और गेम्स को एंजॉय करेंगे. We shall go swimming in the swimming pool of our club. जो हमारे यहाँ क्लब है उसमें जो स्विमिंग पूल है वहां पे हम स्विमिंग करने भी जाएंगे. My uncle has sent me a lot of toys and games and it would be fun playing together. मेरे अंकल ने मेरे लिए बहुत सारे टॉयज और गेम्स भेजे हैं और बहुत ही फन करेंगे हम उन गेम्स को टॉयज को खेलकर. My father is taking all of us to a zoo on Sunday. तो मेरे फादर हैं वो हमें जू में भी ले जाएंगे संडे को. It would be such a treat watching animals and birds. बहुत अच्छा होगा जब उन एनिमल्स को और बर्ड्स को देखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे. We could eat in one of the lawns there. जो वहाँ पे लॉन्स बने हुए हैं वहां पे बैठ के हम कुछ खाएंगे भी. We could sing and dance and enjoy ourselves. और हम डांस करेंगे वहां पे, एंजॉय करेंगे, सिंग करेंगे. I hope you will be able to come. मुझे पूरी आशा है कि तुम जरूर आओगे. Your loving friend Renu. Right? So in this way you need to end this letter. Again I tell you, this is informal letter which you are going to write to your friend for spending a weekend with you. आप एक लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड को जिसमें आप उसे कह रहे हो कि इस वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे को आप मेरे पास आ जाओ. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द राइटर एड्रेस. जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना है, उसमें नेम मेंशन नहीं करना, जस्ट एड्रेस लिखना है. तो एक लाइन को स्किप करना है, फिर हमें डेट लिखनी है, फिर हमें डियर केशव यानी कि जो भी आपका फ्रेंड का नाम है वो लिखना है, फिर उसकी बॉडी लिखनी है यानी कि जो आप मैटर लिखना चाहते हो वो लेटर के अंदर लिखना है, और लास्ट में फिर आपने यूर लविंग फ्रेंड लिखकर अपना नेम लिखना है. सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इनफॉर्मल लेटर. राइट. So this letter you have to write in your fair notebook and then you have to learn it. Then you have to do practice in your practice notebook. Right. Now please open the chapter number 19. Come back. Open the chapter number 19. Come on, do fast. Chapter number 19. 19 chapter. We need to open that. Past continuous tense. This chapter we are going to study now. Past continuous tense. Open this chapter, please. Past continuous tense. Look at these sentences. Manish was flying a kite. They were walking towards the market. It was raining hard when I left my house. So the verbs in these sentences are in the past continuous tense. So dear students, these are the verbs which are written in the bold letters. So these are the verbs for past continuous tense. Because by the verbs we can recognize the tense of a sentence. हम किसी वर्ब्स के द्वारा ही किसी भी सेंटेंस के टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं. वर्ब से ही हमें पता लगता है कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है.
राइट। तो वोज फ्लाइंग, वर वॉकिंग, वोज रेनिंग। तो यहां से हमें पता लगा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। How to form the past continuous tense means what are the formations of past continuous tense? We use was or were and ing form of the verb like was flying, were walking, was raining. So, dear students, first of all, we should use subject, then was or verb. So, was or were, we need to use these two verb, helping verb. Then we need to use fourth form of the verb. Fourth form means ing form of the verb. तो जब कभी हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखना हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वोज या वर लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं। आईएनजी वाली फॉर्म को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट वोज या वर आईएनजी वाली फॉर्म हम लिखनी होती है, उसके बाद रेस्ट ऑफ थिंग्स वी हैव टू मेंशन। Where to use the past continuous tense? We use the past continuous tense to express an action that was going on, that was continuing at some time in the past. तो अब हमें ये समझना है कि हमें past continuous tense कहाँ पे use करना है। ये तो हमें समझ में आ गया। We need what we need to put in this means what are the helping verbs, what are the main verbs. So now we have to understand in which sense and in which condition we should use past continuous tense. We use the past continuous tense to express an action that was going on and that was continuing at some time in the past. Or we can say that it expresses an action that was going on when something else happened. I was sleeping when telephone bell rang. I was playing the piano when Vivek entered the room. So, dear students, here we have understood that we need to use past continuous tense when we want to say that in the past of any point of time we were doing something. तो जब हमें ये दिखाना हो कि पास्ट के किसी पॉइंट पे हम कोई काम कर रहे थे, तो उसके लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि जब फोन की घंटी बजी मैं सो रहा था, तो मैं एक पास्ट का पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं कि उस समय मैं कोई काम कर रहा था, वो काम क्या था, सोने का। आई वॉज प्लेइंग द पियानो वेन विवेक एंटर द रूम। जब विवेक घर में आया तो उस समय मैं पियानो को प्ले कर रहा था। तो मैं बता रहा हूँ एक पास्ट के एक पॉइंट पर जो जब विवेक मेरे घर आया उस समय में वो काम कर रहा था। सो व्हेन वी हैव टू से समथिंग अबाउट इन द पास्ट एंड वी were doing that action, so for that we need to use past continuous tense. Past continuous tense, an action that was going on at some point of time in the past. Same thing I have told you. Fill in the blanks with the past continuous tense of the verb given in the brackets. So you need to use past continuous tense. Dear students, now here you can take the screenshot for your convenience. I have filled all the fill-ups so that you will not face any problem. But I will make you understand why I have filled these options. हमें यहाँ पे क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिल करना है जो वर्ब्स ब्रैकेट में दी गई हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिल करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, वोज या वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ती है। तो दिस इज अ श्योरिटी दैट वी नीड टू यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड where we have to use was and where we have to use were. So was and were we can use according to our subject. If our subject is third person singular, we should use was. And if our subject is I, means first person singular, we should also use was. And with the rest of subjects, we should use were. Means हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, इट हो और कोई एक नेम हो, आई, ही, शी, इट और कोई एक नेम, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर आई हो तो उसके साथ हमें वोज यूज करना चाहिए, बाकी हर तरह के सब्जेक्ट के साथ वर यूज करना चाहिए। नाउ सी सम एग्जांपल्स आर हियर। एन ओल्ड वुमन was distributing. So we have used here was. Why? Because we are talking about a one person, that is third person singular with the name. With the name we need to use was. Lata was looking. Lata is a girl, means we are talking about a one person. The luxury ship was sailing. We are talking about a one ship.
That's why we have used here was. So according to subject, we should use was or were. Nirja was practicing. Nirja is the only one. That's why we have used was here. The naughty boys. Now we are talking about more than one boys. So here we have used here were. Ankita's parents. Our subject is parents. We are not talking about Ankita. We are talking mainly about Ankita's parents. So parents is a plural. So that's why we have used here were. Samir was, because Samir is a name and that is a singular. That's why we have used here was. So according to subject, according to singular and plural, we need to use here was and were. So I, with the I we need to use was. I have told you all trains from Jammu. So all trains, we are talking about all trains. That's why we have used here were. I was buying, right? So you need to fill this exercise. Now let's come on the next chapter, chapter number 20, simple future tense. Let's understand this. Simple future tense, look at the flowing sentences. We shall work hard next year. We will go to fair tomorrow. They will come back next week. The verbs in these sentences are in simple future tense. Again, I tell you, by the help of verbs, we can recognize the tense of any sentence. वर्ब के द्वारा ही हम किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचानते हैं. So these verbs are written in the bold letters, and these are helping verbs and main verb like will or shall or root form. So by this we can recognize that this is the like these sentences are of the simple future tense. हमें यहाँ वर्ब से समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनका टेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, बिकॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल या शैल उसके साथ रूट फॉर्म यूज करते हैं. Right? How to form simple future tense? Now we have to understand what are the formations. We use shall or will plus root form of the verb. Shall work, will go, will come. Shall is used only with I and we. Will can be used with all the subjects. We often use short form also. I shall, like I'll, we will, they will, they'll. So dear students, shall and will, these are the two helping verbs of simple future tense. Shall और will, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की. हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स हम किसी टेंस में यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स उस सेंटेंस को, उस वर्ब को हेल्प करती है सेंटेंस बनाने में, और मेन वर्ब बताती है कि क्या एक्शन हो रहा है. तो विल और शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है सिंपल फ्यूचर टेंस की. And root form we need to use after shall or will. But now we have to understand in which condition we should use shall or in which condition we should use will. So if our subject is first person singular or plural, we can use either shall or will. अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो हम उसके साथ shall भी यूज कर सकते हैं, will भी यूज कर सकते हैं. उसके अलावा हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हम will यूज करते हैं. Right? Means with the I and we need to use either shall or will, and with the rest of subjects, we should use will. Short form of I shall means I'll, we will, they will, they'll, right? So in this way, we can say them and we can write them. Where to use the simple future tense? We use the simple future tense of a verb to express an action that will take place in the time to come, in the future time. The tense is mostly used to give information about the future event, like I shall become a teacher when I grow up. They will play the match tomorrow. Words like tomorrow, next week, next month, etc. may be used to suggest the future time. Right? So, dear students, here we have to understand when we talk about the future, means we imagine that and we predict that we will do something in the future. For that condition, we should use simple future tense. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब कभी हम फ्यूचर की बात करें कि हम ये बताएं कि कोई पर्सन कोई काम फ्यूचर में करेगा, तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. जैसे मैं कहता हूं कि मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में मैं उसे मिलने का काम करूंगा. तो इस तरह की बातों के लिए, इस तरह के एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. जब इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, व्हेन वी से द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर, यूजुअली वी यूज द वर्ड्स लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ एटसेट्रा. इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बोलते हुए.
सिंपल फ्यूचर टेंस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द टाइम टू कम, ऐसे एक्शन जो आने वाले समय में होगा यानी फ्यूचर में होगा, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. Speak out the flowing sentences using the simple future tense of the verbs. Drop the words in the italics. Use the words given in the brackets for oral practice. जो वर्ड्स इटैलिक लेटर्स में दिए गए हैं उनको छोड़कर उनको आप छोड़ दो, उनके स्थान पे आपने सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है और उनको सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलना है. लाइक शी यूजुअली गोज टू हर ऑफिस एट 9 a.m. नाउ ऐड द टुमारो वर्ड एंड से दिस सेंटेंस. So we need to say this sentence. She will go to her office at 9 a.m. tomorrow. Right? Like, I always go to bed at 10 o'clock. We need to fill this sentence after using the tonight word. So we can say this sentence. I will go to bed at 10 o'clock tonight. So जो वर्ड्स इटैलिक लेटर्स में दिए गए हैं उन वर्ड्स को हटाना है, जो वर्ड्स ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उन वर्ड्स को यूज करना है और उन सेंटेंसेस का हमें सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है. सेकंड सेंटेंस, वी गो ऑन अ पिकनिक ऑन फाइन डेज नेक्स्ट संडे. So we need to use this word next Sunday. We can say that we will go on a picnic next Sunday. Sunil sometimes misses his classes tomorrow. So we need to write this sentence. Sunil will miss his classes tomorrow. Mr. Gupta buys a new suit every year. So we can say Mr. Gupta will buy a new suit next month. I learn my lessons every day. So we can say, I will learn my lesson tomorrow morning. We often play carom. So we can say that we will play carom tomorrow morning. The principal meets the parents on Wednesdays. So we can say that the principal will meet the parents next Monday. Now, second, next exercise. Complete these sentences using the simple future tense. आपने ये sentences लिखने हैं, simple future tense में fill करना है. For your convenience, I have done it. Please take screenshots. If you walk in a rain, so what can come here? If you walk in a rain, you will catch cold. So you need to fill the part. See first sentence. If you reach the school late, you will miss your class. If I find the dress too expensive, I will try another. If Simi stands first in the class, she will give us a great treat. If you tease the dog, he will bite you. If you don't help me to lift this box, I will leave the box here. If he can work on a computer, he will finish his work fast. If it doesn't stop raining immediately, I will catch cold. If you continue cutting trees recklessly, we will repent. We will repent one day. REPENT, repent one day, right? So this was all about this chapter. Let's once again take the revision of this chapter. So first of all, we studied about the past continuous tense. We need to use the past continuous tense when we're talking about the past, and we are saying that on any moment of past we were doing any work. So for that we need to use past continuous tense. जब हम ये बताएं कि पास्ट में कोई पर्सन कोई काम कर रहा था, पास्ट मतलब अब से पहले कोई पर्सन कोई काम कर रहा था, तो उसके लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना चाहिए. जैसे मैं कहता हूं कि कल मैं अपने भाई के साथ खेल रहा था, तो मैं पास्ट की मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि उस समय वो खेलने का काम कर रहा था, तो उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं. फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले वी नीड टू यूज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज एंड वर. फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है जो वॉज और वर होती है. उसके बाद आईएनजी फॉर्म द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब की हमें आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी होती है. एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हमें कहाँ पे वॉज यूज करना है, कहाँ पे वर यूज करना है. So was and were are used according to our subject. Subject के according हमें was या were use करना होता है. If our subject is third person singular, अगर हमारा subject third person singular है, यानी कि he, she, it और कोई एक name है, and I means first person singular,
means if our subject is first person singular and third person singular, with the first person singular and third person singular we should use was, and with the rest of subject we should use were. Was and were, these are the two helping verbs. तो हमें वोज यूज करना है जब हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और कोई एक नेम हो, और बाकी हर तरह के सब्जेक्ट के साथ जैसे कि वी, यू, दे और नेम्स के साथ हमें वर यूज करना चाहिए, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, राइट। उसके बाद हमने स्टडी किया यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की हम कब यूज करते हैं, जब हम ये प्रेडिक्ट करें, ये बात बताएं कि फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में कोई पर्सन कोई काम करेगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैं कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा, तो मैं फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं ये पढ़ने का काम करूंगा। तो जब ये बताएं कि कोई पर्सन फ्यूचर में आने वाले टाइम में कोई काम करेगा, तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो क्या होती है शैल और विल, उसके बाद वर्ब की रूट फॉर्म लगाते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि शैल कहाँ यूज करना है और विल कहाँ यूज करना है। आई और वी के साथ हम शैल भी यूज कर सकते हैं और विल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन ईदर सिंगुलर और प्लूरल वी कैन यूज विद देम ईदर शैल और विल। आई और वी के साथ हम शैल यूज कर सकते हैं और विल भी यूज कर सकते हैं। बाकी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि यू, ही, शी, इट, दे, नेम, नेम्स, उनके साथ हमें विल यूज करना होता है। इट्स अ वेरी सिंपल, राइट। If now if you want to ask any